So hello guys, what's up? Hope you are doing great. We are back in another video to learn about what are variables and data types. So variables and data types are very basic topic in programming, yet very interesting in itself. So without building any suspense, let's dive into what are variables. So as the name implies, variables are something which can vary. Uh, so just think about of a refrigerator which has boxes in it to store like anything, vegetables or fruits and all. So think about containers in it. So in the containers we stored apples in it. Okay, and we ate all of them. And then we can store oranges in it. So what we came to know from this, these are containers in which the values can change. We can store anything in this. So similarly, in our memory we have containers, type of containers, and we can store anything in those. So we can store any values in those. So these are called variables. So as we just saw now, variables are container for storing data values. Okay, and they are initialized like data type, variable name, and equal to whatever value we want to store in them. So with an example we can see, so int of our variable, that is some our name, and we can store a value as 5. So these are data type, this is our variable name, and this is the value we are storing in it. We are storing this value in it. So data type is the type of data. So this is of, we can store integer in it. We will learn this in after some time, just wait for it. And variable stores random value if not initialized with any value. So what does this mean is, if we define a variable, if we declare a variable int our variable, and we don't assign any value to it, and we print it, and if we print it, we print this variable, it will give a any random value. So it will be random value stored in it. Now we will move on to identifiers. So identifiers or symbols are the name that we give to our variable or function in our program. That's it, nothing else. So there are some rules for identifiers, so we will know about them. The first rule is names can contain letter, digit, and underscores. So those names can contain letter, digits, and underscores only. And names must begin with a letter or an underscore. Names are case sensitive. So they are capital. The name with capital letters or name with small letters, both are different. So names cannot contain white spaces or special character like this, and reserved keywords cannot be used as names. So before moving forward, let's see some examples on each of these rules. So names can contain letter, digit, and underscores. So letters can be from A to Z, capital A to Z. Digits can be anything from 0 to anything, 9, and underscores. Another rule states that name must begin with a letter or an underscore. So it can be my variable, or it can be my variable. So it can be any of these. So it must start with a letter or an underscore. Names are case sensitive. So my variable and my variable, these both names are different, these both identifiers are different. Okay, so these are not same. It is case sensitive. C is a case sensitive language. Names cannot contain white spaces or special characters like this. So we can't keep white spaces in our name, my variable. This can't be an identifier, any variable or any function. Okay,
and it can't contain these special characters. There are many special characters, so it can't contain these special characters. And rule and reserved keywords cannot be used as names. So there are some reserved keywords in C. There are 32 reserved keywords in C, and names cannot be from one of them. Okay, cannot be of one of them. So those are, you must have heard about any auto keyword, for keyword, while, loop keywords. So we can't use names from them. So here's a small task for you. So यहाँ पे कुछ identifiers दिए गए हैं और तुम्हें बताना है कि valid है या invalid है. So just pause this video and try by yourself. So let's start. So first one is our where और उसके आगे underscore है. So ये valid है या नहीं. So this is valid, right? क्योंकि नेम कैन स्टार्ट विथ अंडरस्कोर और कैप और लेटर. सो नेक्स्ट इज our underscore sum, so this is also valid. Next is to num, so a name identifier cannot start with a number, so this is invalid. Another is same, it is starting with a number, so this is also invalid. Another one is num2, so this is valid, right? We have number but it is not in the start of the identifier. This is also valid. Now the next one is auto, so this is a keyword. So as we talked about, there are some reserved keywords in C, so auto is one of them. So auto वो 32 keywords में से एक है, so ये जो है ये invalid होगा. ये एक identifier की तरह हम use नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज hello, so ये भी invalid है क्योंकि यहाँ पे बीच में स्पेस है. नेक्स्ट इज दिस sum @ a&b, so ये भी invalid है, राइट? इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पे भी हमने स्पेशल कैरेक्टर यूज किया है @ सो दीज आर सम एग्जांपल्स. होप आप सबने सब राइट लगाया होगा. सो एज वी टॉक्ड अबाउट रिजर्व कीवर्ड्स प्रीवियसली, सो आप सबको मन तो किया होगा कि जानने का कि ये रिजर्व कीवर्ड्स हैं क्या, और अगर नहीं किया तो ज़रूर करना चाहिए. So C keywords are predefined words that have some specific meaning to compilers. So compilers ने उन word का meaning fix कर दिया है पहले से. So हम उसे वापस use नहीं कर सकते. And there are 32 keywords in C. एंड दोज आर दिस. सो ये है हमारे सी के 32 कीवर्ड्स, और इसमें से बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, बहुत सारे लूप के जो वर्ड्स है वो यूज हुए हैं जो कंपाइलर ने पहले से सेट कर दिया है. सो हम एक एक करके ये वीडियो में ये सब देख लेंगे, ऐसा नहीं है, सब सब पता चल जाएगा आप लोगों को कि किससे क्या हो रहा है. बट कुछ कॉमन आप लोगों ने अगर सुने होंगे तो कुछ डेटा टाइप्स होंगे, जैसे इंट सुना होगा, और क्या है डेटा टाइप्स, कैर सुना होगा, और और साइंड अनसाइंड सुना होगा, साइंड अनसाइंड सुना होगा, देन लॉन्ग भी सुना होगा. ये डेटा टाइप्स की जगह पे यूज होते हैं. तो फ्लोट सुना होगा. सो ये कुछ डेटा टाइप्स की जगह, अब कुछ लूप्स की जगह यूज होते हैं, जैसे आप लोगों ने इफ और एल्स सुना होगा, देन ब्रेक और कंटिन्यू, और और क्या है, रिटर्न सुना होगा. देन सो ऐसे करके डबल भी सुना होगा डेटा टाइप में. सो ऐसे करके ये सब कीवर्ड्स है जो प्री डिफाइंड है, और एक एक करके जो बाकी हमने नहीं अभी यहाँ पे कवर किए, ये सब भी बहुत सिंपल है टू अंडरस्टैंड, एंड हम ये सब भी एक एक करके देख लेंगे. So we covered variable, identifiers and keywords in C. Another topic that we have to cover is data types. So data types are very basic things. So these are, जैसे इनके नाम से पता चलता है, ये डेटा के टाइप्स हैं. जो भी हम डेटा डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, जो भी यूज करेंगे, उनके टाइप्स हैं. सो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने एक एक्स में 10 इंटीजर स्टोर किया है, सो हम उसे इंट से डिक्लेयर कर रहे हैं. सो ये एक फर्स्ट डेटा टाइप है इंटीजर.
अनदर डेटा टाइप है फ्लोट। सो जब पॉइंट में वैल्यूज होंगे, जब पॉइंट्स में वैल्यू होंगे तो हम फ्लोट यूज करेंगे। अनदर डेटा टाइप है डबल। सो फ्लोट और डबल में ये फर्क होता है कि व्हेन वी वांट टू स्टोर अ बिगर डेसिमल नंबर, सो बिगर नंबर जिसमें पॉइंट हो, तो उसके लिए हम डबल यूज करते हैं। सो फॉर सेफ साइड के लिए हम ज्यादातर बड़े प्रोग्राम्स में डबल यूज करते हैं। डिफरेंस क्या होता है दोनों में कि इसमें कुछ बाइट, कम बाइट का स्टोरेज होता है, इसमें कुछ ज़्यादा बाइट का स्टोरेज होता है। वो हम थोड़ी देर में देखेंगे कि क्या रेंज होता है, कितने रेंज तक हम फ्लोट में और कब हम डबल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आवर डेटा टाइप इज कैरेक्टर। सो वी कैन स्टोर कैरेक्टर इन दिस, any character from A to Z, A to anything, any characters. So we can store that in using our character data type. So moving forward, so as we talked, uh, all the data types has have some range. So we don't have to remember these ranges. Okay, we just have to remember these bytes. Okay, so just remember that one byte इज इक्वल टू 8 बिट्स। ओके, सो जैसे कि कैर में, कैर का हमारा बाइट कितना लगता है एक मेमोरी में। सो एक बाइट मतलब 8 बिट। सो समझो ये 8 बिट है। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दीज आर 8 बिट्स। एंड एक एक बिट में दो वैल्यू स्टोर हो सकती है, राइट, 0 और 1। सो टोटल ये 1 बाइट में कितना स्टोर हो सकता है, 2 to the power 8। सो हम जब कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि इसका होता है 256। सो एक बाइट में 1 बाइट अगर अनसाइंड कैर का रेंज है, सो 1 बाइट मतलब 0 to 255। ओके, सो क्योंकि पहला जो एक स्टोर कर सकते हैं वो 0 होता है यहाँ पे नंबर, इसलिए वी आर टेकिंग 0 and not 1। so the range is from 0 to 255। so as we can see here, it is 0 to 255। another data type is signed char or char। so if we declare only char, so by default it is signed char। okay, सो साइंड कैर का यहाँ पे रेंज दिया है। पहले तो कैर का दोनों का ये सेम है बाइट, एंड रेंज डिफर क्यों, क्योंकि ये साइंड हो जा रहा है। तो साइन में क्या हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर लेने पड़ेंगे। सो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, 256 है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो हाफ नेगेटिव साइड में होंगे, हाफ पॉजिटिव साइड में होंगे। सो जैसे यहाँ पे हमने 0 से चालू करना पड़ा था, वैसे यहाँ पे हमें -128 से चालू करना पड़ेगा, 2 0 एंड देन 2 प्लस पॉजिटिव 127। ओके, सो ये है अनसाइंड कैर। सिमिलरली इंट का होता है साइज बाइट, 2 बाइट का, एंड इंट में भी अनसाइंड और साइंड होता है। सो एज वी कैलकुलेटेड इन कैर, we can calculate similarly in int, and it is very important to try that कि कितना होता है। सो इंट में कैसे कैलकुलेट करना है, ये 2 बाइट है तो 2 to the power 16। सो 2 to the power 16 रेंज होगा इसका 2 to the power 16 -1 रेंज होगा इंट का, 0 to 2 to the power 16 -1। सो 0 to यहाँ तक होता है। एंड सिमिलरली साइन में ये हाफ हाफ शिफ्ट हो जाएगा जैसे हमने कैर में देखा। एंड शॉर्ट इंट भी होता है। देन आवर नेक्स्ट थिंग इज लॉन्ग इंट। सो अगर इंटीजर इस रेंज से बाहर जा रहा है तो हमें लॉन्ग इंट यूज करना पड़ता है, एंड लॉन्ग इंट का रेंज होता है 4 बाइट। सो 4 बाइट मतलब क्या होगा, 2 to the power 8 8 4 सो ये होता है लॉन्ग इंट। एंड सिमिलरली डबल का 10 होता है, एंड फ्लोट का 4 होता है जैसे हमने देखा था। सो ये सब है कुछ डेटा टाइप के रेंजेस। एंड रेंज याद रखने की मैं तो बोलता हूँ कोई ज़रूरत है नहीं, बस बाइट से याद रखना पड़ता है हमें कि कितना लगता है, एंड देन रेंज तो अपने आप कैलकुलेट हो जाता है इस लॉजिक से। So I hope you have understood what we have covered in this video,
and in the next video we are going to cover input output formatting. So till then, keep learning, keep exploring, and see you in the next video. Bye.